For the past 5 months, a harsh winter has covered the world's highest peaks with ice. But in just a few weeks, the Himalayan mountains will awake from their long slumber. Further down the mountains, spring has already arrived and drivers are celebrating the snow's disappearance. At last, the mountain roads, more often than not unusable in the winter, are open. After these long, frustrating months, Atish is dying to get his foot on the accelerator. He shows all the youthful fearlessness of a 28-year-old driver. आप तेज चला रहे हो? हाँ तेज चला रहा हूँ। ऐसी स्पीड होती है हमारी डेली ऐसे चलती है। हाँ। वक्त हो यार, वक्त इंसान का बादशाह होता है। It certainly appears so. Watching Atish drive, you could easily make the assumption that he's drunk. He's zigzagging from one side of the road to the other. But no, Atish is simply trying to avoid being overtaken. Speeding along at 50 miles an hour, Atish takes plenty of risks, but for good reason, according to him. खुद भी पेट में कुछ खाना है, इसलिए हम गाड़ी तेज चलानी पड़ती है। आगे सवारी लेने के लिए आगे तो चलना ही पड़ता है। दूसरे बस आगे गई तो हमने किस लिए जाना है? फिर तो वो सब कुछ खा जाएगा तो हमारे को कुछ मिलेगा नहीं। For this dangerous game of beat the buses, Atish is paid all of $42 a month. But the driver is also entitled to a small percentage of ticket sales. High risk for just a few rupees, in a place where really the mountains decide whether you will reach your final destination. At 6 times the size of France, India is one of the world's biggest subcontinents. Everything here is large. Just like these mountains in the north, among the highest in the world. During the winter, the Himalayas are a sleeping giant, but come springtime, when the giant awakes, his roar can wreak havoc. Drivers risk their lives with each journey. Then the stone came up. Just thanks to God, the life saved of the baby. The baby got saved. Tightrope walkers, descendants of the Silk Road caravan drivers, have become the sole lifeline for the mountain villages that sit quite literally on top of the world. वो यार भाई डर नहीं लगता है, वो डर के आगे जीत है। डर को हराना पड़ता है, डर को मन से निकालना पड़ता है। जो डरा वो मरा। The roads seem to touch the sky, but closer to the clouds, life gets tough. Though relentless, the snow is these men's most precious asset. Himalayan water, an invaluable resource coveted by neighbouring China and Pakistan. Both armies are present here, even at 5,000 meters altitude. The monks pray never to hear the sound of gunshots echoing through the mountains.
Through their years living on the shoulders of the giant mountains, the men have learned one thing. In the immense and dangerous Himalayas, you have to stay humble if you want to survive. In India, the mountain buses accept every possible kind of passenger. The journey to Gulakbar is 10 hours long. Whether standing or squeezed like sardines against one another, nobody complains. They're just happy to have a bus. आंटी बैठ जाओ ना आप नीचे बैठेंगे फिलहाल तो बिशिगा ना गड्डी मत ये लड़कियां कहाँ बैठेंगे फिर अमरान इधर लाए इनको सभी को आपकी मर्जी Atish is a bit of a flirt and likes to show off his skills at the wheel. ये मोड़ पता क्या चक्कर है ये मोड़ पे मोड़ इतनी लंबी गाड़ी इसको सोच समझ के मोड़ काटना है He also enjoys making the women a little bit nervous. जो होता है तो एक भी नहीं बचता सर हाँ अब तो होते काम है आपको ये बातें से काम करो आपकी मुझे 6 साल हो गए चलते इसी रोड पे Perhaps he isn't all talk. और क्या हम क्रूजर में जाते हैं बस में नहीं जाते छोटी गाड़ी में बारिश में नहीं चढ़ना सीधी नीचे जाती नाले में क्यों चाहिए हैं ऐसे बातें में करवा आंटी सही बोल रहा मैं छोटी गाड़ी स्लिप मारती है बारिश में क्योंकि उसको पीछे डबल टायर होता है कहाँ स्लिप मारेगी आप बातें बहुत करते हो थोड़ी आगे से देखना When springtime arrives, many families return to their mountain villages after spending the winter in warmer regions. Gyatso, his wife Lalita and their daughter Stanzin are one such family. नॉर्मली समझो इसको क्योंकि हम सर्दियों में हमारे वहाँ पे काफ़ी बर्फ़ पड़ती है उस वजह से आना जाना बंद हो जाता है इसलिए हम थोड़ा अपना टाइम निकालने के लिए इधर उधर चले जाते हैं राजस्थान राजस्थान में ऐसे ही थोड़ा स्वेटर का व्यापार ही करने क्योंकि हम लोग वहाँ पर 4 महीने का शॉप लगाते हैं वुलन का तो 4 महीने के बाद हम वापस अपने घर घूमना दादी के पास जाने से अच्छा लगेगा दादी मेरे को बहुत प्यार करते हैं मैं नो घर हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अब बच्चों का पढ़ाई जो आ चुके हैं सर्दियों में छुट्टी होते हैं हमारे वहाँ ठंड की वजह से तो गर्मियों में भी थोड़ा बहुत 10-12 दिन का छुट्टी पड़ता है स्कूल में भी बुखार ही तो होता है बहुत कम शम क्योंकि लकड़ी का प्रॉब्लम होता है लकड़ियाँ कोयले वगैरह नहीं आते उस वजह से टाइम पे नहीं पहुँचते उस वजह से छुट्टियों पर क्योंकि बच्चे ठंड में तो स्टडी कर नहीं सकते After 10 nerve-wracking hours, the bus reaches the small town of Golagba. बस मोड़नी है गाड़ी पे Atish begins his return journey, but for this small family, the journey is far from over. They still have 40 miles to travel to get to their village, and these are the most dangerous. They continue on in a 4x4 over a narrow stretch of land that winds through the clouds at over 3,500 meters altitude. Even in the off-road car, success is not guaranteed. At the top, the snow reigns supreme. This is the food hub of the Himalayas and the whole of India, according to these traders. The Chandigarh market in the capital of the state of Punjab is bursting with fruits and vegetables all year round.
As springtime returns, thousands of tons of food are sent out all over the country, including to the mountain villages. In the past, this profitable business was the subject of much dispute between goods transporters. To put an end to this transportation war, the Indian Truckers Association came up with an ingenious system. Drivers write their license plate number up on this board. Then a supervisor assigns trips to each driver. The loads are distributed completely at the supervisor's discretion. Some drivers win, while others will lose. काम नहीं है मंदा टाइम लगता है मंदा बहुत है काम नहीं है गाड़ी ज़्यादा है काम कम है 2 दिन हो गया इससे भी ज़्यादा हफ्ता भी लग जाता है. This driver, however, has no such problem. He's given one specific job each week without fail. कई ड्राइवर तो यहाँ भी ऐसे मिल जाएंगे दुनिया भर के ड्राइवर हैं यहाँ और उनको नाम सुन के ही बोल देंगे कि हम नहीं जाते भाई. अच्छा रोड बहुत खराब है. अच्छा ओके. Kaza is a lost village at 3,600 meters altitude. For 12 years, Rakesh has been practically the only driver to deliver there. Biscuits, vegetables, sugar, preserves, fizzy drinks, everything that a population living in one of the most remote areas of the country might need. 325 miles of mountain road await Rakesh. He crosses the Spiti Valley. A stone's throw away from the Chinese border, this region is called the Middle Land, as it straddles India and Tibet. The Spiti Valley has remained cut off for centuries, and in some places its inhabitants' way of life has barely changed. Some modern elements have appeared, such as mobile phones. Rakesh's main source of communication with his daughter is by phone. Each trip to Kaza takes him at least 5 days there and back if all goes well, so despite the narrow road, he refuses to hang up. ये चक्कर लगा के आना घर 5-6 दिन बाद पक्का 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 जरूर. ठीक है फिर बाय बाय मजा याद आया बस फोन कर दिया उसने. छोटी है भी 7 साल की है टोटली. अच्छा करते ही है टेंशन थोड़ा. Indeed, car accidents in India are not uncommon, and this isn't just down to careless driving. Some roads are particularly unforgiving. Each spring, workers attempt to widen the roads by any means possible. Rakesh gets out of his truck at regular intervals to check that he can safely fit around the bends. आपको कभी भी आपका ट्रक ये पहाड़ी पे ये टच वच होना या कुछ हुआ नहीं अभी तक? तो हाँ हुआ. बढ़िया बहुत रिस्क है. ऊपर से पत्थर आने का तो बहुत ज़्यादा रिस्क है. आप कितना मर्जी सेफ गाड़ी चला रहे हो ऊपर से अचानक पत्थर आ गया तो कुछ नहीं कर सकते आप. At such high altitude, vegetation is scarce or non-existent. The cold and lack of rain in the summer produce craggy rock faces. There are no roots to stabilise the earth, so when the snow melts and the water seeps into the rocks,
the mountains start raining pebbles. A small group of road menders maintain a semblance of safety. Few cars in the region still have their windshields intact. The road mender's work is risky. 1-2 साल पहले काम कर रहा था, उस टाइम लग गया पत्थर काम करते करते। ऐसे काम करते करते पत्थर लग गए ना टांग में, बड़े लग गए ना पत्थर, काफी वो फ्रैक्चर हो गया। तो बाद में नीचे ले जाकर बनाया, अब थोड़ा तो हल्का फुल्का चल रहा है। Their work seems never ending. Tomorrow, or in just a few hours' time, they will have to start all over again. But without them, the whole valley would be blocked, and the villagers would not get their supplies. खुद मिस्टेक करते हैं आप ड्राइविंग में, कहीं ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं, जहाँ सामने नजर आ रहा है कि यहाँ गाड़ी नहीं निकलेगी, फिर भी वहाँ ज़बरदस्ती करते हैं, फिर ज़्यादा रिस्क है। Driving along the edge of the ravine, Rakesh repeats this mantra to himself. Only patience and good sense will lead you to the end of the road. Some drivers, however, want to go faster, save time, deliver more orders. A harebrained strategy in a place where only yaks and goats can truly roam the mountains risk-free. Although when it comes to crossing a river, they're rather less at ease. बकरी को ये जानवर बेचारा है तो बीच बैठ जाता है तो टपा लेते हैं, पता नहीं लगता इनको ना, पता ना जानवर। The Bakawal tribe has been waiting for years for the Indian government to install this cable system, and it has revolutionized their lives. पिछले साल उधर तार लगी थी पत्थर से, हाँ सिंगल तार है की थी, अभी भी बस इसी में रस्सी डाली तो चली गई। रस्सी डाल अच्छा फिर हाँ 2-3 बंदे चले गए यहाँ से, मर गया। हाँ मर गए, पानी में गया, वो मिला ही नहीं, उनको डेड बॉडी नहीं मिली। तो इसलिए गवर्नमेंट ने हमें ये दिया, इसमें हमें बहुत आराम हो गया। हाँ जी, जो पहले तार थी हमको बहुत डेंजर थी। अच्छा, तो अभी जो ग्राज लगाई जो हमें, इसमें हमें बहुत आराम हो गया। गवर्नमेंट ने हमारे के लिए ये बहुत अच्छा किया। The Bakawals spend each winter at the bottom of the valley.
Then, in summer, they migrate higher up into the mountains in search of pasture. These Islamic nomads live just like their ancestors. Nothing's really changed for centuries. तुम बोलो तो मैं दिखाऊं बताऊंगा। हाँ अब बताइए। हमारा जिला ये दादा था ना, परदादा, दादे का बाप, वो कश्मीर से आया है। फिर यहाँ आके बस के इधर माल भी लाया, तहीं आके यहाँ पिजड़ शिजड़, ये पिज शिज होती है, पिज देखिए थे, जंगली जानवर होता है ना, कुकुड़ मुर्गे शुर्गे। The Bakabols are poorly regarded in India. Rejected from society, they live tucked away in the mountains. हाँ जी, खुश नहीं थे क्या है? क्यों खुश? क्या खुश है? इधर हमारा कोई खानदान नहीं, कोई नौकरी नहीं, खुश कहाँ है? किधर खुश है ना? खुश तो है नहीं ना। मुसीबत का दिन है, खुश कहाँ है? वो तो ठीक है, ये पहली बार खा रहा है ना हाथ से, तो ऐसे करके ना। Nearly 500,000 Bakabols live in the mountains, adapting their way of life to the seasons. Their priority is finding food for their goats, but the search for plants and shrubs is dangerous work. As soon as the sun rises on the mountain top, elderly Haji and his nephew Zubir head out in search of these precious leaves. ये घास नीचे है ही नहीं, ऊपर ही वास्ते घास है, नीचे थल्ले थोड़ा वो पहले ही माल को खा लिया। ये ऊपर इस तो भी ऊपर पहाड़ी में घास है, बहुत बड़ा घास। Two hours of searching finally pays off. All that remains is to cut the branches, but this is where things get complicated. आराम से मैं फड़ के रखूं, गाड़ी मैंने दे दे। आराम से बल्ले छोटी रस्सी इधर से ऊपर चढ़ जा, किधर से चढ़े? शाबाश बहादुरा, बहुत बड़ा बहादुर है। ओ छोटा को जल्दी चढ़ तो ले जाएगा। ये क्या सुट्टी में ना बैठ जा। हाँ कुछ ध्यान आल पे करना ना करना, गाँव दी ना कर, कुछ ध्यान आल करना, अगर तेरा यार लम्हा होगा ऐ शाप पास ऑन कर तो इंगा मोर गाड़ी ना ऐ पास ऑन कर तो इंगा मोर गाड़ी ना ऐ वो आ जा वापस। आ जाओ जुबैर, आ जाओ। वो हो बहुत पहाड़ी में जाते, जिधर मैं जाता उधर कोई जाता ही नहीं था, मेरे जानवर नहीं जा सके था। अब बूढ़े हो गए, कमज़ोर हो गए, जा ही नहीं सकते, चक्कर आते, ये बात है। नहीं तो मैं जो इससे बद में जाता था पहाड़ी में, ये टपता ही नहीं था इधर, मैंने इधर से जोर ना ठोकिया जाए इधर काट बदल। ये ओखा का काम है। और जनाब हम बोलेंगे आप जिंदगी जाएगी कहीं से, फिर माल मोशी के साथ करना पड़ता है। मोरू के पत्ते, इसको मोरू बोलते हैं बकरवाली बोली में, इसको ये मोरू का पत्ते। ये शाल माल यही खाता है 6 महीना हमारा, ये भेड़ बकरी मंज डंगर जो भी माल है इसको एक को खाता है, बाकी ये घास सूख जाता है, इसमें कुछ असर नहीं होती। चलो आप अंदर का कौन है, दिल प्यारे दुखा को कौन जाने होवे, सजना गला ला के मिलिए। With 40 kilos of branches on his shoulders, youthful Zubir runs down the mountainside at full speed. Haji carries the same weight, but goes slightly more slowly.
अब जिंदगी नहीं हमारी। जो मैच गाय हैं ये इसको कोई नहीं, व्यापारी कोई आ गया, कोई मुसीबत पड़ रही ना, फाका लगा ना, दाम में बड़ा कीमत वाली चीज़ है ये बकरी, जो भेड़ बकरी है इसको ले जाते हैं। Haji's way of life seems unchanging, and yet, bit by bit, pastures and migration trails are disappearing. India is experiencing an economic boom. Road networks are expanding and more people, towns and villages are popping up all over. As nomads, the Bakawals have no land of their own. It is hard for Haji and his tribe to find their place in 21st century India. Building roads through these mountains is nothing short of a mammoth task. The highest villages, like that of this small family, remain almost impossible to access. The final 40 miles of their journey take place on the edge of the ravine. Lalita and her husband are coming home after 4 months away, selling t-shirts to tourists in a warmer region. मम्मी पापा का बहुत याद आता है। हाँ, मम्मी पापा वगैरह बहुत याद आते हैं। गांव का भी बहुत याद आता है, रहना सहना, इधर उधर घूमना बहुत याद आती है। वहाँ पे जन्म तो वहीं पे लिया ना, रहना सहना पहले से वहीं पे है, तो फिर वहाँ पे अपने वहाँ पे बहुत अच्छे लगते हैं। हरियाली है, पेड़ है, खेत है। हम तो ज़्यादा माता रानी को ही मानते हैं, तो हम तो यहाँ पे जब हम समझो जैसे सुबह हम अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, पहले हम माता रानी का नाम लेते हैं। अगर हमको चलना भी होगा तो माता रानी के नाम से, भोलेनाथ के नाम से हम इस रोड पे चलते हैं, क्योंकि बचाने वाला भी वही भोलेनाथ है और मारने वाले वही भोलेनाथ है। सर इसके आगे है जो गाड़ी की स्पीड है वो बिल्कुल 4 और 10 किलोमीटर के हिसाब से चलेगी। गधे की तरह चलेगी। जय भोलेनाथ, चलो धीरे धीरे भोलेनाथ, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। ऊपर क्या देख रहे हो? नहीं पत्थर पे गिर सकते हैं। This pathway was carved out 10 years ago. Using explosives and hard work, the workers completed it in the early 2000s. Before its construction, people had to walk for 5 or 6 days to get home to their villages. तो यहाँ पे समझो जो गाड़ी के अगर समझो ब्रेक फेल हो गए, समझो अगर गाड़ी अपना मोशन तोड़ गए, तो अगर पीछे रिवर्स गाड़ी हो गई, अगर ड्राइवर घबरा गया तो समझ लो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। वो गाड़ी अगर अंदर के लिए भी काट सकता है तो बचा भी सकता है। तो कोई ड्राइवर थोड़ी सी गाड़ी अगर
It seems we haven't caught the goddess Matarani on a good day. At 2,500 meters altitude, the weather takes a turn for the worse. Kata? Mote. No, muffin. Huh? The go good. Uncle Lord. Até lager muffin. Bayata na pot. भजन का लगाने का मतलब ये है कि हमको मदीसी भजन का सहारा है, क्योंकि अगर हम भजन नहीं लगाएंगे तो हमको कुछ मन में कुछ डर जैसा लगता है। इस भजन को लगा के हमको थोड़ा माता रानी का भी थोड़ा सहारा मिलता है। But despite Sanjay's prayers, the road becomes too dangerous. Whilst the government may not tarmac the roads, it has at least built mountain refuges for those who get stuck. हम लोग अब रेस्ट हाउस में रुकेंगे। दरवाज़ रेस्ट हाउस में रुक रहे हैं। आगे रोड खराब है क्योंकि वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, स्किड हो रही गाड़ियाँ, काफ़ी स्लिप हो रहे हैं, तो रात को हमें दरवाज़ रेस्ट हाउस में रुकना पड़ेगा, जो कि हमें काफ़ी रात को रेस्ट हाउस में रुकना पड़ रहा है। अभी हम रेस्ट हाउस जा रहे हैं, दरवाज़ रेस्ट हाउस में रुक रहे हैं आज की नाइट। दरवाज़ रेस्ट हाउस में रुक रहे हैं। मिलेगा कमरा यहाँ पे? कमरा मिलेगा रेस्ट हाउस में? हाँ जी हाँ जी, अच्छा मिल जाएगा ना। खाना पीना दूर है? It गई सा। अच्छा। $3 a night. It's inexpensive, but there's no heating for that price, and outside temperatures are verging on -10 degrees. As for Rakesh, he's approaching his 15th hour of driving, 250 miles of mountain climbing. He too prefers to stay on the safe side. रेस्ट भी के थका हुआ मैं नहीं हूँ मैं, फिर आगे रोड ख़राब है, इससे आगे तो अभी सुबह ही चलेंगे यहाँ से दिन। With a window that doesn't close and no heating, it looks as if the night will be a chilly one. It takes strength and courage to be a tightrope walker on the slopes of these freezing mountains. The road alternates between a dirt track and tarmac all the way along. Rakesh is still 60 miles away from Kaza. The weather looks good, but at 4,000 meters he comes across some black ice. पीछे जाएगी फिर गड़बड़ है, फिर रुकती नहीं है, वही रोक देनी, जहाँ रुकेगी, जहाँ स्किप करेगी। उखाड़ने को
सब कुछ मालूम होना चाहिए, जिसको नहीं पता है वो करेगा ही। ज़्यादा निकलने को पीछे नहीं जाना था। थोड़ा सा भी 2 इंच इधर किया तो ऊपर पहाड़ी में लग जाएगा, 2 इंच इधर गया तो नीचे गिर जाएगा गाड़ी। बहुत रिस्क है वहाँ। बस यही यहाँ थोड़ा सैलरी ज़्यादा है, कमाई थोड़ा ज़्यादा है, तब करके यहाँ चलते हैं। $330 a month to be precise, $100 more than a regular journey, but the risk to benefit ratio isn't so convincing. Rakesh enters the Spiti Valley, an area spanning 12,000 kilometers squared, stretching along the Indo-Tibetan border annexed by China in 1951. The two superpowers observe one another from the mountains. In the monasteries, some of which have been around for over 1,000 years, the monks pray never to hear the sound of gunshots echoing through the mountains. Over 4,000 meters above sea level lies the Key Monastery. It is Tenzin Nima's job to spin these prayer wheels every day. माने पे में हूँ तो बोला दे नहीं ये चीज़ वा ये नाना ने ज़ूम आज चेरे सी की यानी छातों चेंदों चेरे सी तों यूट्यूब की यानी ज़ूम थामा ये बोल चुप बास यानी ये कोरोना ने फयुन नवाजा मिके चु दिबा साबे मंगो जो बास होते मिनम फयुन चुमा बास Nearly 300 monks live in the monastery. They wake up at dawn each day and devote their time to prayer and meditation. Yeah, that is on. An austere life in order to free themselves from all physical attachments and trivial desires. The monks pray that mankind will finally find peace. Truba jamna ye tasan ye men ajendo men tam parna bar de ya mitili jamna ya bar person bar hote naje indus me sena tuk se ko shobo mila
어디 세나게 탑시지 람쭉 톰난 어디 탐구죠 와진 담불링 딜라 마토 무게 마요 와체 아니 시대 두나 कैसा था दरवाजा सॉस अच्छा मिला खाना अच्छा मिला हैं अभी हम किलाड़ की ओर जा रहे हैं तो दरवाजा सॉस में रुके कल नाइट आज हम किलाड़ की ओर जा रहे हैं किलाड़ से उड़ान भटोरी की ओर जाएंगे The family's village is still over 16 miles away. The driver prays to the goddess Mata Rani to clear the way for him, but will she hear his prayers? ये नीचे खेत है इनमें हम जैसे मटर बीजते हैं गेहूं बीजते हैं आलू बीजते हैं तो अभी सब्जी वगैरह सब्जी दीदी अब नीचे सेब होते हैं यहाँ पे सेब भी होगा यहाँ पर किलाड़ में जितने भी हैं अगर बर्फ नहीं गिरेगा तो हम खेतीबाड़ी में पैदावार नहीं होगा हमारे फसल जो वो बर्फ से ही मैक्सिमम बर्फ से ही होता है जितना बर्फ ज़्यादा पड़े उतना हमारे लिए अच्छा होता है अच्छा अच्छा That may well be, but at this moment the snow is becoming a serious problem. पीछे लोड नहीं है ना गाड़ी को पीछे पत्थर डाल दे They must use stones to help with the traction. हाँ जी उस्ताद जी गाड़ी जा सकते क्या आगे आगे तो यार भाई गाड़ी बड़ी मुश्किल है नहीं चलेगी जाने का आगे क्यों कोई मतलब भी नहीं आगे जाने का पैदल ही जाना पड़ेगा घर मेरे हिसाब से आप पैदल निकल जाओ वो भी आपके लिए 2 घंटे धूप भी अच्छे है हम आराम से पहुंच जाएंगे मिलेंगे है ना फिर मिलेंगे उस्ताद जी बाय They still have 4.5 miles to walk in the snow. But unlike many who might be in this situation, the small family remain in high spirits. मम्मी है पापा है भेड़ बकरियां है याक है जुबू है सब कुछ है वहाँ उनमें उनके साथ रहने के लिए बहुत अच्छा लगता है उनको देख के At 6 years old, Stanzin makes the journey without any complaints. दादी बहुत सारी अच्छा क्या है क्या चिमक क्या उनमें क्या है तो क्या हम क्या ची दम क्या
Huh? Don't With soaked feet and bodies numb with cold, at last they arrive home after 2.5 hours of walking. They're finally able to warm up in the only room with a wood stove. And after 4 months apart, the family is finally reunited. Daddy, namaste, Mabiyaki. Namaste, Bia. Namaste, Bia. मेरे को अच्छा नहीं लगती है बल्कि दादी अच्छी लगती है Dorje Ram, the grandfather, completely supports his son's decision to leave each winter. He earns a much better living this way than rearing animals, but he has never dared to make the journey. राजस्थान में से आके मेरे को हफ्ता दिन हो गया। जैसे सफर में मैं 2 दिन चंडीगढ़ बैठा, उसके बाद 1 दिन वहाँ की बिजनेस ही ऐसा है ना, उनके पास वो दिमाग में भी नहीं आया। उस टाइम रोड नहीं था हमारे पास, कुछ भी नहीं, कहाँ जाए बताएंगे। तरक्की जैसे हमारा यहाँ पहले तो कुछ नहीं था, ऐसे अपना खेती बाड़ी में थोड़ा थोड़ा अनाज उगाता था, बस उसी से टाइम पास करता था। मटर पहले इधर उधर रोड नहीं था, मटर कहाँ जाए, बीज तो लेगा पर वो बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, कहाँ से ले जाऊँ, कैसे करो। अब जैसे हमारा रोड आने से, बिजली आने से काफ़ी कुछ हमारा यहाँ डेवलपमेंट सहूलियत हो गया। In 8 months' time, after the harvest is over, the small family will return to Rajasthan to sell T-shirts to tourists. Rakesh has finally reached his destination. After 2 days of driving, he has arrived in Kaza, a small village at 3,660 meters altitude. Without Rakesh and a small number of other daring travelers, the valley would be cut off from the rest of the country. Rakesh takes the risky journey twice a month. मजे लेंगे यार, पूरे मजे हैं, बहुत खुश मजा आ गया। पीछे बड़ा टफ था रास्ता, अभी यहाँ पहुँच के रिलैक्स। अभी शाम को पार्टी सार्टी होगी यहाँ, कल वापस होंगे। The provisions delivered by Rakesh are added to the village's non-perishable food stocks. Here they keep 1 to 2 months' worth of food in case of heavy snowfall. Life in the Spiti Valley certainly isn't easy. And it starts at school. In the classroom, temperatures rarely go above 10 degrees. It is difficult to focus on their exams in these conditions. Little Tsultim curses the day when in 2010 the Indian government made school compulsory for children from 6 to 14 years old. He spends weekdays at boarding school and comes home with his friends every weekend to greener pastures. भेड़ बकरी गाय या घोड़े पे में बैठने के लिए टाइम मिलता है और हमें और वहाँ मस्ती मारने का टाइम ज़्यादा मिलता है इसलिए। यहाँ पे घोड़े तो है नहीं, यहाँ पे है नहीं, अब बैठने के ऊपर कुत्तों के ऊपर तो बैठने सकते।
Their village is 2.5 hours away in a remote area at 4,400 meters altitude. Scorpion. Around 20 families live here. They are practically self-sufficient and hold solidarity and mutual aid as core values. Without these values, none of the village's inhabitants could survive. Such is life on top of the world.